For barbershop for beauty salon is on him, and barbershop is on my parents like that. तो लगा लो और 50,000 रुपए और जोड़ लो, हो गए 6 लाख रुपए। Yeah. ये जो नॉर्मल फर्नीचर होता है ना, something different that is given is given by the groom's father like that. तो भाई ये भी आप जब इतना ही सब कुछ कर रहे हो तो इसका भी क्यों कर रहे हो, क्यों एहसान ले रहे हो? सब कर लो, खुद ही कर लो फिर, और क्या है। फिर भी वो यूं कर दी भाई, आओगे जाओगे नहीं क्या फ्लाइट से, तो 2-3 लाख रुपए तो उसमें नहीं खर्च हो जाएंगे। Groom's parents. And from groom? It must be high. It must like not high, but So more than. they have to give separately, like Yeah. groom have to do give separately and their parents have to. Yeah. तो भाई ये यहाँ पर देखने वाली बात है कि लड़के के जो माता पिता हैं वो अलग से देंगे लड़की को गोल्ड, और लड़का अपने आप खुद से अलग से देगा। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और मेरे साथ हैं मेरा नाम Hi, नमस्ते ज़रूर। मेरा नाम फ़ाइज़ा है। Is फ़ाइज़ा here? हाँ, तो फ़ाइज़ा हमारे साथ हैं और आपको पता है क्या डिस्कस करने वाले हैं हम। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव टॉपिक है भाई ये, बहुत ही एक्सपेंसिव। दिस इज टॉपिक इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव। यू नो व्हाई? Why? Because it is all about expenses. तो दोस्तों अक्सर क्या होता है जब भी हम शादी ब्याह करते हैं, किसी भी शादी समारोह में जाते हैं, उसकी लग्जरी देखते हैं और कहते हैं भाई बड़ा पैसा खर्च करा बंदे ने, या फिर हम सोचते हैं कि भाई इस शादी में कितना पैसा खर्च हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत लोगों के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझसे जानना चाहते हैं कि भाई इरानियन मैरिज में आखिर आपका कितना पैसा तमाम I'm all out of money! हो गया है। तो उसी के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं जो कहते हैं दिवाकर भाई हमें भी एक इरानियन लड़की से शादी करनी है। लॉट्स ऑफ पीपल कमेंट एंड से वी वांट टू मैरी एन इरानियन गर्ल, सो I want to make this video for them, that be prepared for that expenses. Okay, continue. Okay. In the name of God. Jai Shri Ram. First of all, I have to say this thing that in old times, but it is the thing that I am saying is not for all the parts of Iran, okay? Still, even those times, even in old times, we had the matter of locality. I mean, based on different, like according to different places, according to different regions and localities, the ritual get held differently. But let me just put it in this way: we have different celebrations. Okay. Yeah, right. And we have Banapurun, we have Afkonon, we have Wait. Hanabadan, we have Wait. First, Balapur, Ballet Borun. Second, Afkonon. Athkoron. Athkonon. Third, Hanabandon. And the last one is wedding. Last is proper wedding. And some people stay, some families, because it is the fifth one that I am saying. It is a celebration that mostly got held in not formally, not now, but still there are some people that want to hold it like us. My family wants to celebrate this thing also for us. What? Patahti. What? It is the day after. It is the day after wedding night. Potakti. Patahti. Whatever the Robert. Because it's like भाई आप जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो बोलना है। देखो अकेला नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। फो ताकती। फो no. Pa. फा ताकती। No. Say just pa. फा Tahti. ताकती।
when you're spitting. No, it is, I said from my epic Thakti. Pothakti. Right? Pothakti. Hot echt. Pothakti. Sorry, wait this much, this much. Pothakti. Don't pronounce this much heavy. Okay, Pothakti. Pothakti. Okay. It seems like I'm become British. भाई मेरा एक्सेंट ऐसी ही है, जो लोग मेरे एक्सेंट की बुराई कर रहे हैं, मैं बचपन से ही ऐसी अंग्रेजी बोलता हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है? आपको लगता है मैं एक्सेंट बना रहा हूँ? नहीं भाई, मैं तो ऐसे बोलता हूँ। तो ये पांच सेलिब्रेशंस होते हैं जो कि मेजर होते हैं और जिनमें पैसा 5 मेन वन होते हैं जिनमें पैसा खर्च होता है दाब के। These all are very much expensive. तो अब I think not as much as the weddings of India. Indian weddings are huge. They are not wedding. Here, भाई, only those kind of families that are very much what to say, rich. They just get that much big celebration. what you don't know, Faiza. In some communities, marriage is a event, is a huge event. It is not something. So. That the relatives invite a bride and groom. No, of course not. रिश्तेदार बहुत कमीने हैं. क्यों बुलाएंगे भाई तुम्हें? And when let me say this thing in Bhagosha, when the boy and when the girl get married to each other, so the relatives start to inviting them to their houses or to wherever they want, but for the main meal, maybe dinner, maybe lunch, but not breakfast, okay? And also after giving the bride and groom and some other relatives, because in most of the invitations they invite the bride and groom, but also they invite the bride and groom's family too, and maybe some other people, some other relatives, okay? So in that they also give the bride and groom a gift. Maybe it is money, maybe it is something else. हमारे यहाँ रिश्तेदार जो हैं वो खाना खाने आते हैं शादी के टाइम पे, उससे पहले वो नहीं आएंगे, कहीं काम करा लें, रात को पहुँचेंगे, लिफाफा पकड़ाएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। जी। In Indian wedding, relatives just came for the party dinner, and after they eat, they just give you envelope. In that envelope might be there is some money or not. I don't know. And they give the envelope and they just say, oh, okay, goodbye. No. Okay, so forget about all these things. Let's talk about expenses. What are the expenses? भाई खर्चे क्या हैं? हम यहाँ पे खर्चे आपको बताने के लिए आए हैं कि इरानियन मैरिज में खर्चे क्या क्या होते हैं। तो हम बिना किसी देरी के आते हैं भाई अब एक्सपेंसेस पे कि क्या क्या एक्सपेंसेस शुरुआत से फ्रॉम द बिगिनिंग क्या क्या एक्सपेंसेस लगते हैं एक इरानियन मैरिज में। तो कंटिन्यू, यू हैव टू से फाइज़ा दैट व्हाट आर द एक्सपेंसेस that should be paid in Iranian marriage, and if someone wants to do an Iranian marriage. Okay, let me just say the expenses. First thing, before saying everything, and before saying those kind of items that I know, I have to refer to this fact that it depends on the families. Like, they decide that both sides, I mean girl family and boy family decide with each other that which side pay for what thing. Okay. Oh, it's like that. Okay. Yeah, it must be fair. It must be fair. But also we have some general thing that they said that wedding, for example, is mostly for boys. Aft konon is for girl. Like that. It is just fair. And we have the rings, as you know. We have the bouquet. We have some boxes that is bride box and that are bride boxes and groom boxes. In these boxes, we put the gifts of the brides and grooms. For bride, it is paid. The boxes are paid by for groom. The gift boxes are paid by the bride family.
If I am talking about the bride boxes, bracket boxes, so these boxes are paid by the groom family. But what are things in that box? Yeah. So for example, for the girls, some what do we say? Cosmetics, some skincare things, and even some several dresses, and some shoes, and like shoes and different things. For a girl also, like we have the suit, we have the what we call it, we have the shirt, we have shoes, and we have skincare things again, for not skincare but something like trimmer, some perfumes like that. It's just like this. So what are the prices of these boxes? Approximately minimum 5 or 6 million, yeah. so which is No. around $100, right? Yeah. Around $100 Around 100. minimum. That is minimum, and maximum is nowhere. Yeah, maximum is Like हाँ, how, like like 10 what million. whatever you want to spend. तो भाई कम से कम जो ये boxes होती हैं, इस boxes में कम से कम आप लगा लो 10,000 रुपए लगा लो. And these boxes are given to the bride and groom generally in those first celebrations, not in wedding, not in the final one, in the first ones. I talk about ring. You know about ring, okay? So you know, based according to the weight that it has, that the rings have. The So it price is is according, the gold But- is according to the price of gold. Yeah. So also, as you said, we have gold option that no. In Asconon, the family, like the groom family, and he himself, like the groom, have to give the bride gold. And also about the bride family is the same. Just from the bride side, just her parents have the duty to give her the some gold, and others can just pay money. So, but right now, I want to say, for example, the groom side at least has like for example, groom parents have to give us round about. For example, have to give us a gold round about 60 million. So it is about gold. So it is. We talk about gold, we talk about ring, we talk about the gift boxes, and now it's time to talk about But the gold is just 60 million. What do you mean? Yes, of course. I'm saying that not about gold, not from grooms. I'm talking about groom's parents. Groom's parents. And from groom? From it must be high. It must like not high, but So more than they have to give separately, like Yeah. groom have to do give separately and their parents have to. Yeah. तो भाई ये यहाँ पर देखने वाली बात है कि लड़के के जो माता पिता हैं वो अलग से देंगे लड़की को गोल्ड, और लड़का अपने आप खुद से अलग से देगा. And what is the total value of gold, like from groom and from their parents? so from the both side, maybe it become around about 200 million. 200 मिलियन भाई होता है, आपको मैं बता देता हूँ 2 लाख रुपए करीब होते हैं. यानी 200 मिलियन जो पैसे रुपीस में होते हैं वो 2 लाख रुपए होते हैं. तो 2 लाख रुपए तो ये हो गए, और जो दूसरे फंक्शन में है यानी गोल्ड वगैरह, बेसिकली तो खर्चा नहीं है, लेकिन ये खर्चे में गिना जाएगा. तो पहले वाले में तो भाई होते हैं करीब 30-40 हज़ार रुपये खर्च, लेकिन दूसरे वाले में जिसमें गोल्ड आता है उसमें 2-2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं. अब आप लगा लो टोटल हो गया 3 लाख रुपए. अभी तक 2 फंक्शन हुए हैं और दोनों फंक्शन में मिला के हुए हैं 3 लाख रुपए खर्च. एंड नेक्स्ट Look, the rings and all these main ones, all these like main gifts are given to the bride and groom in the first celebration, and even of course in the wedding gift we have. Of course, even wedding we have. So about the next item, look, and the thing that I am saying, I don't want to say that which of them they go to which celebration, because some things are mutual. Like in every celebration, there must be background. Okay, so. There must be maybe some wedding venue, maybe a place to holding the celebration, and so wedding software and wedding background. Wedding software, we have it only in the engagement celebration, which is the first, second celebration.
Yeah, so but because we didn't have it, so we are gonna have it in our wedding. And wedding software is from groom side. Okay, from groom side, and even the background of it is from groom side. But the wedding venue, the wedding venue, I'm not talking about all the celebrations. Let me talk about ourselves. The wedding venue and the foods of it are from the bride side. Okay. So according to I told you before, according to the family's decision and according to the celebration, like mostly in Iran, they said that afternoon is some parts of afternoon is from the bride side, like a wedding venue and this thing, and for the wedding, most of the expenses are from groom side. तो कुल मिला के आक्ट कानून जो कि एक सेलिब्रेशन होता है, उसमें म्यूचुअल खर्चा होता है लड़के का और लड़की वाले का, दोनों का। जो वेडिंग वेन्यू होता है वो लड़की वाले की तरफ से होता है, और उसमें जो सोफरे और दूसरी जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग खरीदे हैं, वो लड़के वाले की तरफ से होती हैं। तो इसमें जो लड़के वाले का खर्चा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। और ये कहना कि जैसा हमारी तरफ जो है शादी पूरी लड़की वाले के ऊपर होती है, लड़के वाले का खर्चा थोड़ा बहुत ही होता है, इतना नहीं होता जितना लड़की वाला कर देता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी अगर मैं कैलकुलेट कर दूँ तो ये सारे भी लड़के वाले के जिम्मे आता है, जिसमें लड़के वाले ही पैसे इसमें खर्च करता है। तो आप इसमें जो कि 3 लाख रुपए है, इसमें 2 लाख रुपए और जोड़ लो और 5 लाख रुपए आप तैयार रखना अपने पास। सो let's talk about the next expenses. We can also refer to the design of the car, like the bride and groom car. We can also refer to the bouquet of the bride. But in every celebration, like in 2 celebrations of this 5 celebrations, the bride has to have even not 2, 3. And from out of the 5 celebrations, in 3 celebrations, the bride must have bouquet. So all of these expenses on groom. Yeah. तो ये सारे खर्चे भी लड़के वाले के होते हैं, जिसमें लड़की के जो ड्रेस, मतलब ब्राइड ड्रेस इज ऑल्सो ऑन ग्रूम। तो लड़के वाले के ऊपर ही होता है जो लड़की की ड्रेस होती है, कार का खर्चा। तो भाई इसमें आप 50,000 रुपए और जोड़ लो कम से कम, तो आपका खर्चा हो गया 5.5 लाख रुपए तैयार रखना। We have also beauty salon and barber shop. And it is on groom. Barber shop is mostly on the it's on bride side. And it is a feeling. It is karma. It is karma. In India, always the bride family just have to pay the expenses. So only I am the one who is paying the karma, right? From all of the Indians. You are paying for all the celebrations. We have only one celebration. Yeah. So what do I want to say? For barbershop and for beauty salon is on him, and barbershop is on my parents, like that. तो लगा लो और 50,000 रुपए और जोड़ लो, हो गए 6 लाख रुपए। Yeah, and also we have the we have the case which is named dowry. Dowry, in old times the bride family must give it, must provide it, but nowadays it is half-half. तो इसमें भी लड़के वाले का खर्चा हो जाता है। Yeah. And also we have this thing that they said, like the family said, that if you want that the bride family pay, so you have to give us the money as a groom family. Okay, we just pay for the dowry, but as a groom family, you have to give us the same price that we spent on dowry. Like it is like that. All around me are familiar faces, worn out places. It is very much fair, You're burning from this kind of fur? This much fair, it is so fair. It is so unfair. It is so fair. It is so unfair. No, it is so fair. It is half-half. Oh my god. It is half-half. जो भी मुझसे कह रहा है ना कमेंट में कि भाई ईरानियन लड़की, None of the sides are supposed to buy the other side. Understand it? जो भी मुझसे कह रहा है ना कि भाई ईरानियन लड़की ढूंढ दो, दिवाकर भाई ईरानियन लड़की ढूंढ, भाई अगर तुम्हारे बस की हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ढूंढ दूंगा, बस अपनी जेब देख लेना। What did you say? I will end your life, and then I'll end your family's life, and all of your friends, and I'll eat your favorite food and vomit it over your grave, and then I'm going to take your favorite movie, and I'm going to replace all the dialogue with fart sounds.
Many people just comment that find us the Iranian girl, find us the Iranian girl. So I send them. I have no problem to find an Iranian girl for you, but your pocket should be ready for that. Don't think that if you get married to an Iranian girl, the girl's family, the bride's family are supposed to pay for dowry, and they are supposed to be in a very much unfair way. Don't think like that. So I heard that even bride parents give some furniture to bride. Yeah, I'm saying so. I'm saying that these things must be in half. Like for example, and the door for us is not the house, is not the car in this thing. It is only the things that we put in the house, like the furniture. भाई जो normal furniture House होता है is ना, something different that is given by the groom's father, like that. तो भाई ये भी आप जब इतना ही सब कुछ कर रहे हो तो इसका भी क्यों कर रहे हो, क्यों एहसान ले रहे हो? सब कर लो, खुद ही कर लो फिर, और क्या है फिर? मत करो ना, कुछ भी मत लो मेरे हिसाब से तो भाई, लेना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये तो मजाक की बात हो गई जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सारा चीज़ पूरी तरह खत्म हो जानी चाहिए कि भाई दहेज वगैरह का, भाई तुम कैपेबल हो ना तो खुद करो सब कुछ। Like they're very much fair. That much fair that they say that if we, for example, if the groom family give our daughter, like give to our son-in-law and our daughter a house, then okay, we will provide this house and our son-in-law and our daughter with the furniture and all the things at home. But if they didn't give, so it is very much different, So, different based on the things. शादी करनी है अगर ईरान में तो भाई तैयार रहना। बाकी मेरा तो कहना ये है कि भाई दहेज वहेज सब बेकार है, तुम खुद इतने कैपेबल हो, कमाओ अपना, खरीद लो, क्यों एहसान ले रहे हो? और ये है अच्छी बात है, कोई अपनी लड़की दे रहा है तो कितनी बड़ी बात है। तो ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, जो पहले मैंने करा मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग मुझसे कमेंट में कह रहे हैं तो भाई आप अगर इतना कर सकते हो तो तैयार रहो, मैं ढूंढ दूंगा। तो ओवरऑल जो खर्चा होता है, मैं सिर्फ ये मैंने खर्चा बताया कि जो लड़के वाला, क्योंकि आप लोगों की कमेंट आई है ऐसी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप तैयार हो, आपकी जेब में 10 लाख रुपए हैं, अब 10 लाख 6 लाख से दिवाकर भाई ने 10 लाख कैसे कर दिए? वो यूँ कर दी भाई, आओगे जाओगे नहीं क्या फ्लाइट से, तो 2-3 लाख रुपए तो उसमें नहीं खर्च हो जाएंगे। तो 10 लाख रुपए अगर आपकी जेब में हैं तो भाई मेरे से कहना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन लड़की कहाँ की लड़की। ठीक है, तो दोस्तों ये था कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं नॉर्मली, मतलब मिनिमम कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस एक ईरानियन शादी में होते हैं लड़के वाले के। और मैंने यहाँ लड़के वाले का जिक्र करा, तो लड़के वाले के कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो वही चीज़ आपको मैंने बताई है। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था, ताकि आपको मैं एक्सपेंसेस बता सकूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।